Hello professionals, this video is for all those people who are currently working as an HR or who want to make their career in human resource industry. And today in this video we will learn as an HR what is that one thing which you should always aim for, and that is how to make your organization an employer of choice, because it will not only make the life easy of recruiters as attracting the right candidates will be far more easy, but it will make the life easy of all those people who are working in HR operations or in talent management role, as it will help you to increase the satisfaction level of your employees and to control attrition in your organization. So stay tuned till the end of the video if you belong to HR community and want to stand out from the crowd by following EOC strategy. So now let's get started. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लैरिफाई कि एम्प्लॉयर ऑफ चॉइस बनना वन टाइम एफर्ट्स बिल्कुल भी नहीं है. इट इज़ एन ऑन गोइंग जर्नी. सो एज एन HR यू हैव टू इंश्योर दैट यू पुट कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स to make your organization an employer of choice, and there are 3 steps in employer of choice journey. Number 1, attracting right candidates from the market. This step is all about making the strategy to attract candidates from the market to your company. And candidates are basically those candidates who are perfect fit in terms of skill set and compensation which your organization is offering for any particular role. And this is the pain point of every recruiter, क्योंकि आज की डेट में कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करना बिल्कुल भी इजी काम नहीं है. इनफैक्ट ये काफ़ी मुश्किल है. And here I'm sharing top 3 ways with you which will help you to attract right candidates from the market. और टॉप 3 के अलावा जो बाकी पॉइंट्स हैं उन्हें मैंने एक डॉक्यूमेंट में लिस्ट कर दिया है, जिसको डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ. वहाँ से आप चेक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं. सो नंबर 1 थिंग विच यू कैन डू टू अट्रैक्ट राइट कैंडिडेट्स फ्रॉम द मार्केट और टू अट्रैक्ट कैंडिडेट्स फ्रॉम द मार्केट, that is, design your recruitment campaign around those 1 or 2 things which are strengths of your company. As an HR, first of all, you have to make efforts to identify strengths of your organization, to identify those 1 or 2 points which differentiates your company from rest of other organizations, and then design your recruitment campaign accordingly. As an example, हो सकता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर काफ़ी अच्छा हो, या फिर हो सकता है कि आप काफ़ी अच्छे पे मास्टर हो, या फिर हो सकता है कि आप उतने अच्छे पे मास्टर ना हो बट आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वर्क पॉलिसीज़ काफ़ी एम्प्लॉय फ्रेंडली हो, या फिर हो सकता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के लिए इनफ लर्निंग एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हों. सो वट एवर इट इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक द एफर्ट्स to identify strengths of your organization, to identify those points which differentiates your company from rest of other organizations, so that you can design your recruitment campaign accordingly. And here I am sharing few recruitment campaigns with you which were well designed. Point number 2, A players bring more A players in the company. So अगर आपके existing employees आपसे happy हैं, then please use them to get the references for more employees, which is one of the cheapest way of hiring. And your employees will also be happy that they are helping the organization to grow. Point number 3, use word of mouth to spread positive culture of your company. और उसके लिए आपके organization में जो भी candidates interview के लिए आते हैं, चाहे वो select हो या reject हो, you need to make sure that you pass on a kind of experience to them which they would like to remember for forever. And that is called wow experience. And to pass on wow experience to your candidates, you can use that time when they are just waiting for their turn to appear for the interview. And you can do these things to pass on wow experience to them. Number 1, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कॉफ़ी टेबल बुक्स डिज़ाइन करा सकते हैं विच शुड टॉक अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन वर्क कल्चर, हिस्ट्री एंड अचीवमेंट्स विच कैंडिडेट्स कैन रीड व्हेन दे आर जस्ट वेटिंग फॉर देयर टर्न टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू. या फिर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में LED स्क्रीन जो अधिकतर सभी ऑर्गेनाइजेशंस में होती है रिसेप्शन के पास, आप उसे यूज़ कर सकते हैं. एंड यू कैन शोकेस your organization core values, work culture, history, achievements, employees happiness quotient, your R&R program, and there are many more things which can be displayed on that LED screen. And then make sure कि कैंडिडेट को इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में एडवांस में पूरी इन्फॉर्मेशन हो, उन्हें पता हो कि उनके कितने इंटरव्यू राउंड्स होने हैं, कौन कौन हायरिंग मैनेजर है जो कि उनके इंटरव्यू लेने वाले हैं. एंड देन अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, make sure that you share the interview feedback with each candidate, even with those who are rejected in the interview, because that will help you to enhance your image as an employer in front of the candidate, because it will make them feel that their efforts
and time was valued by the company. Now let's understand about second phase of employer of choice journey, and that is your selection and hiring process. As an HR, you need to ensure कि आपके organization का selection and hiring process इतना robust हो that you aim to hire only A candidates in your organization who will help organization to grow. And here I'm sharing top 3 ways with you which will help you to strengthen your hiring and your selection process. So number one thing which you need to do, that is train your hiring managers on hiring process and behavioral interview process. And then you also need to ensure कि आप अपनी organization में hiring quality भी check करें so that you get to know who are the managers who really do good hiring and who are the managers whom you further need to train on hiring process. और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप हायरिंग क्वालिटी कैसे चेक कर सकते हैं, देन मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में जहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि एचआर ऑपरेशंस में आप डैशबोर्ड कैसे बना सकते हैं और कैसे आप एचआर ऑपरेशंस के वर्क को बिजनेस गोल्स के साथ अलाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं इस पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. द लिंक ऑफ द वीडियो इज शोइंग हियर इन द आई बटन. You can learn from here. Point number 2, you need to train your hiring managers to share realistic job preview with each candidate. As an HR, आपको लाइन मैनेजर्स के साथ आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो फ्रीक्वेंटली हायर्ड पोजीशन है उनका रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू तैयार करना चाहिए. And you should capture each task which candidate is supposed to perform by being in that particular position. It will ensure process driven hiring in your organization and not person driven. क्योंकि कल की डेट में अगर हायरिंग मैनेजर चेंज हो जाते हैं या फिर अगर एचआर ही चेंज हो जाता है, then also company will be sharing same realistic job preview with each candidate, which will also ensure that you set the right expectation in terms of the work role which candidates are supposed to perform in your organization. Point number 3, you also need to ensure कि आप candidates के साथ उनका जो सैलरी स्ट्रक्चर है उसकी क्लैरिफिकेशन जॉब ऑफर रिलीज करने से पहले ही शेयर कर दें. दे शुड बी अवेयर वेल इन एडवांस कि उनके सैलरी स्ट्रक्चर में से कितना कितना डिडक्शन किस किस कंपोनेंट के अगेंस्ट में होने वाला है एंड व्हाट विल बी देयर फाइनल इन हैंड सैलरी. दिस शुड नॉट कम टू देम एज अ शॉक पोस्ट देयर ज्वाइनिंग. इट शुड नॉट बी अ केस कि कैंडिडेट को तो ये लगा था कि उनकी टेक होम सैलरी 50K है, जो कि रियल में उनका CTC या फिर उनकी ग्रॉस सैलरी है, बट सारे डिडक्शंस के बाद उनकी टेक होम सैलरी सिर्फ 40K है. Because these kind of things create unrest and dissatisfaction in your employees. Now, when you have understood what extra do you need to do to attract A candidates from the market and to strengthen your hiring process in order to become employer of choice, it's time to understand how to engage your existing employees, which will help you to increase their satisfaction level in the company. But before that, I want to ask a small question to you. Are you really finding this video informative, helpful? Am I adding something to your knowledge today? If yes, then like the video, share your thoughts in the comment section and do subscribe to the channel to know more about job interview tips, career guidance and latest HR trends. And here on this channel, you will find the answers of all your career related queries. So please click on the subscribe button right now. Coming back to step number 3, and that is how to keep your employees engaged. If you are able to keep your employees engaged in a meaningful way, then it will not only help you to increase their satisfaction level, to control attrition in your organization, but your happy employees will bring more employees in the company. That means your reference hiring will increase. That is one of the cheapest way of hiring, and your hiring cost will get reduced. So it has multiple benefits, and here I'm sharing few ways with you which will help you to engage your employees in a meaningful way. Number 1, do create a formal and informal recognition culture in your company. As an HR, you need to help your organization to set up a formal recognition culture in your organization, because it's a proven fact that no employee wants to work with an employer who does not appreciate their efforts, because it does not make them feel valued. इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली बेसिस पर एम्प्लॉयज़ को रिकॉग्नाइज करने का, एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करने का एक फॉर्मल प्लेटफॉर्म ज़रूर अवेलेबल हो. और यहाँ पर मैं किसी तरह के रिवॉर्ड की बात नहीं कर रही हूँ. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट रिकॉग्नाइजिंग द एफर्ट्स ऑफ योर एम्प्लॉयज़ इन अ फॉर्मल वे. Another thing which you need to do, you need to encourage your line managers to recognize the efforts of their team members in informal way as well. क्योंकि फॉर्मल रिकॉग्निशन हर दिन या हर वीक नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके लाइन मैनेजर्स अपने टीम मेंबर्स के एफर्ट्स को इनफॉर्मल तरीके से ज़रूर रिकॉग्नाइज करें. और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. अ सिंपल थैंक यू नोट टू एम्प्लॉय,
A simple appreciation on a lunch table, or just recognizing the efforts of the employee in a weekly meeting in front of 10 other team members will serve the purpose and will make the employee feel valued. Point number 2, आपके ऑर्गेनाइजेशन में सभी एम्प्लॉयज को ये जरूर पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली बेसिस पर क्या टारगेट्स हैं, सो दैट दे नो what exactly company is trying to achieve and how are they helping the organization to achieve that bigger goal. और ये भी इंश्योर करें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में उन टारगेट्स के अगेंस्ट में कंपनी की क्या अचीवमेंट है ये एम्प्लॉयज़ को ज़रूर पता हो, सो दैट दे फील दैट येस कंपनी इज शेयरिंग सच काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विद देम without even asking, which will set a transparency culture in your company and employees will feel that yes, they are part of the mission. Point number 3, आपको अपने employees के लिए enough लर्निंग और करियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल करानी चाहिए सो दैट दे डू नॉट नीड टू लुक आउटसाइड फॉर देयर करियर ग्रोथ. इस वीडियो में मैंने हर स्टेप के लिए टॉप 3 पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए हैं और जो बाकी के पॉइंट्स हैं उन्हें डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ. वहां से आप इन्हें ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं. एंड इफ यू विल फॉलो दीज पॉइंट्स then you will start your journey to make your organization an employer of choice. If you have any other question related to HR or to your career, you can directly reach out to me on Instagram. Here are the details. Another important thing, I have designed this complete playlist of human resources, especially for those people who are currently working in HR or who want to start their career in HR. And watching this playlist will give you a clear idea how does HR function work in any organization and how can you grow in HR.